हामी अहिले नोर्बुलिङ्का इन्स्टिट्युटमा छौँ। यो चाहिँ क्याफे, यहाँको दृश्य असाध्यै मनमोहक छ र हामीलाई एकजना गाइड हुनुहुन्छ, गाइड गर्ने। So what is your name? My name is Tenzin. Tenzin. Yeah. Yeah, you are guide and Yeah, I'm a tour guide here. okay, thank you. ये गेस्ट हाउस की एंट्री है सर। Oh, This is the entrance to guest house and this is stupa. Stupas built इसलिए किए जाते हैं ताकि पॉजिटिव एनर्जीज फ्लरिश करे एक जगह से। नॉर्मली मानते हैं बुद्धा के रिमेन्स पाए जाते हैं स्तूपा के अंदर। अब ये गारंटी नहीं दे रही हूँ कि इसके अंदर होंगे, पर मानते हैं नॉर्मली कि स्तूपा के अंदर बुद्धा के रिमेन्स पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो ऊपर वाले को हम लोग प्रेयर फ्लैग्स बोलते हैं। प्रेयर फ्लैग्स में 5 कलर है, ब्लू, व्हाइट, रेड, ग्रीन और येलो। इसी ऑर्डर में चलते हैं। 5 एलिमेंट्स को डिपिक्ट करता है। जैसे ये ब्लू है वो स्पेस या स्काई के लिए स्टैंड करता है, व्हाइट है क्लाउड या विंड के लिए, रेड फायर के लिए है, ग्रीन वाटर के लिए है और येलो लैंड के लिए है। ठीक है। इनको नॉर्मली हम लोग हाइट पे रखते हैं और जहाँ से पानी फ्लो होता है। रीजन ये है जहाँ से पानी फ्लो होता है वहाँ से विंड की जनरेशन होती है। और हम लोग ये बिलीव करते हैं जब कभी विंड प्रेयर फ्लैग को टच करता है इसकी पॉजिटिविटी लेकर थ्रू आउट द प्लेस जाता है। ठीक है। अब सारे प्रेयर फ्लैग्स अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि बीच में एक डीटी मतलब गॉड या गॉडेस का पिक्चर है। जो मंत्र लिखी गई है प्रेयर फ्लैग में वो बीच की गॉडेस को रिप्रेजेंट करता है। अब हर एक गॉडेस का एक ही काम तो नहीं होगा ना, हर गॉडेस का अलग अलग मोटिव या थ्योरी पार्ट होता है ना। तो हर प्रेयर फ्लैग में अलग अलग डीजीज का फोटो होगा और उसमें वो रिप्रेजेंट करेंगे मंत्र। ठीक है। इसमें एक बार पढ़ेगा कर देंगे हम लोग, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, ये जो है ये तारा है, ऐसे वैसे नहीं, ये वाइट तारा है। अगर आपको पता होगा तारा जो है हमारे मदरहुड की डीटी है। उनका एक मंत्र जो हम चैंट करते हैं उसको ट्रोमा निशुसाची बोलते हैं। ट्रोमा का मतलब तारा, निशुसाची जो है नंबरिंग है 21 के लिए स्टैंड करता है। अगर सेंटर तारा काउंट नहीं करते हैं तो उनके ही अलग 21 वर्जन्स हैं, ये मानते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा, अभी मेन टेम्पल गए हैं आप लोग, गए लामा के टेम्पल? अभी तो नहीं। अगर जाएंगे ना, अगर एक साइड में अगर बुद्धा का स्टैचू होगा तो जब दूसरे रूम में जा रहे हैं, जब हम लोग पूरा परिक्रमा करेंगे, दूसरे रूम में ग्रीन तारा का पूरा वर्जन्स होगा। सेंटर में ग्रीन तारा होगा सबसे बड़ा वाला और बाकी उनकी छोटे छोटे पीसेस होंगे 21 नंबर में। उनके कलर अलग है, वाइट, येलो, रेड और ग्रे, ये 4 कलर है। अब उसमें डेप्थ है, लाइक येलो जो है थोड़ा ज़्यादा मस्टर्ड येलो में आ गया या थोड़ा लाइट येलो में, ऐसे ऐसे कलर होकर 21 कंप्लीट होते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वाइट है वो पीसफुल एक्टिविटीज़ के लिए है, येलो जो है इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़ के लिए है, रेड जो है वो पावरफुल एक्टिविटीज़ के लिए है और जो ग्रे है वो एंगर एक्टिविटीज़ के लिए माना जाता है। और जो ग्रीन है इन सब का मिक्सचर है उनके अंदर। और वाइट स्पेसिफिकली लॉन्ग लाइफ के लिए भी माना जाता है। जब कभी भी लॉन्ग लाइफ या अच्छी हेल्थ के लिए मानते हैं तो वाइट तारों को भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा आ रहा है बस। अच्छा, ये वज्रपात है जो देख सकते हैं फिशेस, और जब बहुत गुस्से वाला स्ट्रक्चर है ना, पर ये इनको मैनिफेस्टिंग ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज मानते हैं, अपनी तरह पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी एक थांका में देखेंगे तो एक बना रहे हैं इनको बेस कलर के साथ। जो ज़्यादा ही एंगर फेस का जो गॉड होता है ना, अगर बेस कलर मानते हैं तो पूरा ब्लैक जाता है बेस कलर, क्योंकि उनकी फेशियल स्ट्रक्चर की वजह से है। क्योंकि गुस्से वाला फेशियल स्ट्रक्चर है तो ब्लैक बेस कलर जाता है। ठीक है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, ये अवलोकितेश्वरा है, कंपैशन के भगवान है। ये इनके पास 4 हाथ और 1 सिर है। जब नील पार दिखाते हैं, जब कोई पार नहीं दिखाते हैं, 4 हाथ और 1 सिर है। जब सारा पार दिखाते हैं तो 11 सिर और 1000 हाथ के साथ हैं। 1000 आंखें भी हैं, एक हाथ के पाँव में 1 आंखें हैं इनकी। ठीक है। अगर 11 सिर देख सकते हैं, जो 10 पहले के 10 सिर जो है 1 से 10 तक है वो बहुत पीसफुल है। फेशियल स्ट्रक्चर जो है उनका बहुत ही शांत स्वभाव का है। जो 11वां सिर है वो बहुत ही गुस्से वाला है, क्योंकि मानते हैं जब अवलोकितेश्वर जब फॉर्म ह्यूमन के फॉर्म में थे बहुत कंपैशनेट थे इंसान ही। तो जब तक अगर मान लेते हैं कि ये कब इनलाइटमेंट का
स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ से वो लोग यहाँ पहुँच जाते थे, पर देखते थे इनके साथ में जो उनके पास में लोग हैं वो बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाए, तो वो अपना ही स्टेज नीचे आकर वापस ह्यूमन नॉर्मल फॉर्म में आ जाते थे। फिर से वापस ट्राई करते थे ये बोल कर सबको कि चलो इन लाइफ में अचीव करते हैं, खुद की जो सफरिंग है वो साइड में रखकर यूनिटी में साथ में लाइक सबकी हैप्पीनेस, खुद की हैप्पीनेस से सोचकर ऊपर चलते हैं। पर कोई भी अचीव नहीं कर पा रहा था जैसे वो चाहते थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। तो उन्होंने अपनी बॉडी को ही 1000 पीस में डिस्ट्रॉय कर दिया था अवलोकितेश्वर ने। माना जाता है कि बुद्धा ने उनकी सारी बॉडी को असेंबल किया गया है, तभी जाकर 1000 हाथ और 11 सिर हुआ है अवलोकितेश्वर का। और ये जो सबसे एंगर्ड फेस है जो अवलोकितेश्वर का है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जब हम किसी को अच्छे से बात करते हैं सबको समझ में नहीं आता है, जब गुस्से से बात करें तभी जाकर लोगों की समझ में आता है कभी कभी, ये रिप्रेजेंट करता है। ये जो है जैसे हिंदू में सरस्वती है, थोड़ा सिमिलर है सरस्वती की तरह, ठीक है। इनका नाम मंजुश्री है, मेल है, पर गॉड ऑफ विजडम एंड नॉलेज है। जो स्वॉर्ड है उनके हाथ में तलवार जो है वो विजडम के लिए है, और जो लोटस के अंदर बुक है वो नॉलेज के लिए है। ये बुद्ध भगवान है। आपको पता होगा जब इनलाइटमेंट अचीव कर रहे थे तो उनके पास कोई भी नहीं था, अपने नियर बाय एनिमल हो गया, कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं था, तो उनको तो कोई चाहिए था विटनेस के लिए कि वो इनलाइटमेंट अचीव कर रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने अपना हाथ जो है 4 फिंगर वो अर्थ पे रखा, ये बोलते हुए कि धरती उनकी विटनेस है इनलाइटमेंट के लिए, तो वो ऐसे बैठते हैं। ये बुद्धा अमितायु है, इनसे पहले वाले बुद्धा ये हैं। नोबुलिंका के बारे में बता देती हूँ ना आप लोगों को, आपको आइडिया आ जाएगा। जो असली का नोबुलिंका है ना वो तिब्बत में है, हिज होलनेस का समर पैलेस है वो नोबुलिंका। ये नोबुलिंका समर पैलेस तो नहीं है, बस तिब्बतन कल्चर आर्ट को प्रिजर्व करता है, ठीक है। इसका रेप्लिका भी नहीं है, जहाँ वहाँ तिब्बत में जो नोबुलिंका बनाया गया है ना वैसे सेम नहीं बनाया गया है, बस नाम लिया गया है। नोबुलिंका का मतलब नोबु जो है लिंगा, नोबुलिंगा जो है 2 नामों का मिक्सचर है, नोबु और लिंगा। नोबु माने बहुत, एक नाम है हमारे अंदर बहुत कॉमन नाम है जिसका मतलब बहुत कुछ ऑस्पिशियस या प्रीशियस, जैसे ज्वेलरी हो गया उसको नोबु बोलते हैं। और लिंगा का मतलब पार्क, जहाँ घूमने जाते हैं। जब कंबाइन करते हैं प्रीशियस पार्क और ऑस्पिशियस पार्क, ये ज्वेलरी पार्क के नाम से जाना जाता है नोबुलिंका, ठीक है। ये जो है ये अवलोकितेश्वर है, जैसे मैंने नीचे आपको बताया था 11 सिर और 1000 हाथी सा जो भगवान है, ये यहाँ का स्ट्रक्चर देकर बनाया गया है। इनको रखा गया है एज एग्जाम्पल, और यहाँ का स्ट्रक्चर बनाया गया है। जैसे 11 सिर है वो सेंट्रल टेम्पल डिपिक्ट करता है, और जो 1000 हाथ है यहाँ के वर्कशॉप्स डिपिक्ट करते हैं। 1000 वर्कशॉप्स तो नहीं है दिखाने के लिए, बस जो स्ट्रक्चर है वर्कशॉप का उनके 1000 हाथ की तरह है, ठीक है। जो पहला वर्कशॉप हम देखेंगे वुड कार्विंग का होगा। वुड जो यूज करते हैं पाइन वुड है, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में मिलता है हिमाचल में। अदर देन दैट टीक वुड भी यूज करते हैं जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, चार्ट पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं, फिर वुड पे स्टिकिंग हो जाती है, फिर कार्विंग स्टार्ट होती है। कार्विंग जब फिनिश हो जाता है तो अदर या कलर करते हैं या पॉलिश करते हैं वुड को। अगर आपने घर पे कभी वुड रखा हो तो डस्ट बैठता है उसके ऊपर, और गीले कपड़े से ही जाता है। वो वुड जो है बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है पानी का, वो रॉट करेगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए वार्निश करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं।
यो नर्बुलिङ्का इन्स्टिच्युटले दिएको तालिम, काष्ठकला सम्बन्धी तालिम। Painting workshop. Yeah. You would have seen here there was no coloring and such is going on here, right? Because we have a different section for painting itself. It's called wood painting. Now there's certain carving that needs painting, all kind of carving. So they have their own skill. Embossing on the wood with the help of syringe. Yeah. In the syringe, there's a mixture of distemper, glue, and water. Firstly, all the pictures are drawn with the help of syringe. Then they fill in with watercolors, and last it gets varnished. Okay, let's go. This is a syringe that I was talking about. It has a mixture of distemper, glue, and water. All the pictures are drawn with the help of syringe first, then they fill in with poster colors. Okay? You can just see what they're doing. It's made by syringe. Yeah, it's made by syringe and then it has been painted later on inside. जब आपके चुने हुए प्लेयर्स मैदान में कमाल करेंगे तब आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे। When the weather is good, it's an outside, because they do it inside. Varnishing on top of the wood is done here. You want to go in and see from the side? Yeah. I believe it is. Because she has to see books. Just see over there then. And we'll go to the next section. And glasses. How does one? You need to remove your shoes here. Okay, no problem. You just go around and see. What is this? Yamantaka. Yamanta? Yamantaka. Yamantaka means destroyer of the god of death. Basically, the Yama is the god of death, and Antaka means the destroyer. Basically, he is the destroyer of the god of death from the cycle of samsara to help one's to reach enlightenment. So, he is a protected deity in Tibetan Vajrayana Buddhism. Yeah, some wood carving, wood painting. फिनिश प्रोडक्ट है वो यहाँ जाता है सेलिंग पर्पस के लिए। ठीक है।
ये बुद्धा का स्कल्पचर है जो 14 फुट लंबा है, गोल्ड से प्लेट किया गया है। इस ऑर्गन से सेंटर को गिफ्ट किया था जब खुला था। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो लंबा सा क्लॉथ आ रहा है वो थंब का एक लीफ का है, जिसको बनाने में 3.5 years लगे हैं। ओके, अब वो 2 सेकंड यहाँ वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं बाहर ही हूँ। यो मन्दिर अगाडिको दृश्य। अब वो डॉन म्यूजियम है जो हिस्ट्री रिपीट करता है। देख सकते हैं ना, छम डांस है ये नेविगेशन सिस्टम है तिब्बत में। These are the 3 religious kings who brought Buddhism to Tibet. अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग ड्रेसेस हैं। These are of Khampa people. Like the dresses of Ladakhi and Kinori people are really influenced by Tibetan culture because it was part of Tibet back in days. These are the dresses of Ladakhi and Kinori people. From one place to another. This is a picnic spot being held in Tibet by Yuzhong people. Yuzhong is the traditional dress of this like state is basically Yuzhong people. Religious ceremony being held in Tibet. These are higher authority monks we call normal monks at home for prayer ceremony. And these 2 monks are having debate session. Like the monk who's standing, he'll do something like this. It means the question has transferred from his end to the other end, the person sitting down, and the person who's sitting down will answer it. Could talk about anything that they feel like talking about, movies, books, religion, or politics, anything that they feel like talking about. It's more on the logic part, who holds a greater logic. At the back, if you see, that's the winter palace of Vishnu's supported palace. And whatever the ritual is performed is to purify the surroundings before any higher authority monk or person comes. And this is Nepal. He's Tibetan very Catholic. बिच्छू बुटी सुना है? बिच्छू बुटी नेटल सुना है ना? ये बेसिकली इनका फूड है। मानते हैं अगर नेटल को साल में एक बार खाएंगे तो पूरे साल बीमार नहीं पड़ते हैं। मिथ है कि फैक्ट है पता नहीं है अभी तक, पर मानते हैं तिब्बतन लोग। बहुत खुश हो। हाँ, चलिए मैं आप लोगों को ऑफिस में लेकर चलती हूँ। अच्छा, हामी धर्मशालाको नोर्बिलिङ्का इन्स्टिट्युट होइन यसको पुरा नाउँ। हजुरलाई अब हाम्रो गाइडले घुमाउनु भयो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो ठाउँ? यो चाहिँ अब तिब्बतको पुरै संस्कृति झल्काउने गरी त्यहाँको धर्म, संस्कृति, कला सबैलाई एउटै थलोमा देखाउने गरी यो प्रदर्शनीको रूपमा राखिएको रहेछ। यो चाहिँ नेपाल लगायत धेरै देशले चाहिँ यो परम्परागत धर्म संस्कृति मान्ने देशहरूले चाहिँ यो मोडल अपनाउनु चाहिँ अत्यन्त लाभदायी लाग्यो। जस्तो यहाँ प्राविधिक शिक्षा पनि दिएको रहेछ होइन? नेपालमा त यस्तो छैन नि अहिले। नेपालमा छ तर सबै एकै ठाउँमा नभएको रहेछ। थाङ्का पेन्टिङको अलग्गै हुन्छ, यहाँ चाहिँ वुड कार्भिङको, थाङ्का पेन्टिङको, अनि त्यो अरू आर्टहरूको पनि सबै एकै ठाउँमा राखिदिएको रहेछ। त्यो भएर एउटै कम्पाउन्डभित्र मान्छेले जुन सिक्न सक्ने विद्याहरू सबै सिक्न पाउने देख्दा चाहिँ अत्यन्त खुसी लाग्यो। अनि यहाँ चाहिँ यो नोर्बिलिङ्काको जस्तो गाइड बहिनीले हामीलाई घुमाउनु भयो, केही नयाँ स्वाद छ यसमा? उहाँहरूको चाहिँ अब एउटा नेपालको गाइडहरू भन्दा उहाँहरूलाई अलिकति बढी तालिम दिएको हुँदो रहेछ। त्यो भएर उहाँले जुन लुङटादेखि लिएर स्तुपादेखि लिएर सबैको
एउटा तिब्बतन बुद्धिज्मको पर्सपेक्टिभबाटै उहाँले व्याख्या गर्नुभयो। यो यहाँको रमणीय दृश्य, अत्यन्त व्यवस्थित, फुल, पानी अनि सँगसँगै एउटा इन्स्टिट्युटमा आउँदाखेरिको जुन सुखानुभूति हुन्छ त्यो देखिन्छ। यो इन्ट्रोडक्सन। My name is Serin Kunsop. I'm the welfare officer and human resources manager of the institute. Can you briefly describe, briefly introduce about this institute? Okay. The place is called Norbulinka. Norbulinka is a Tibetan word. It says precious jewel garden. In Tibet, Norbulinka is a summer palace of His Holiness the Dalai Lama. But to start this institute in the exiled Tibetan community is to preserve Tibetan art and culture, because when we Tibetan came into exile in 1959, the first challenge for us is to preserve our identity. And to preserve identity, you need to preserve your language, your art, your culture. So for that, with His Holiness guidance, there were many Tibetan schools who were started in the Indian different settlements, but there was not such an institute where we could learn the Tibetan art and culture. So with His Holiness guidance and Mr. Kelson Nishi, he's the founder of the institute, he started this institute to preserve this art and culture and train the young generation who was specially born in India as a refugee. We train the students in this art and culture in this institute. And after their training period, we employ them in this institute. And also we used to, like those who came from Tibet as a refugee, those who fled from the Tibet, then who came into exile, who didn't got a basic education, we train them. At the same time we employ them also. So we also trying to solve the unemployment in the Tibetan exile community. It's a self-sufficient institute. What we produce in this institute, we sell them in, through online, through in different stores. And by raising these incomes, we spend on our staff's salaries, their kids' education, their medical expenses. So we have different sections, like Thanga painting is a Buddhist painting, metal sculpture is a Buddhist sculpture, wood carving, carved in traditional Tibetan style. Apart from that, we also have a tailoring department, weaving department, and these are like we try to create a new products, a mixture of Tibetan traditional and in modern style. We create a new products so that the people who visit our frequently, they could see the new products every time when they visit our institute, to take them with them. So in all, you can see right now we have a population of almost 300 people working in this institute, and also most of this had already learned this art from the institute. So this is India is the largest settlement for Tibetans. Yes. I think Nepal is the second settlement. Nepal, you can see Nepal is the second. And India is the largest population, but it used to be in 60s and 70, 80, 90. Until then, India is the largest population of exiled Tibetan community, and Nepal is second. Now the most lots of people have migrated to some Western countries also. Then the United States, Canada, there also, in Europe also, there are a lot of Tibetans who migrated these countries also, and there is also a huge Tibetan population living over there also. Yes. I think in Western countries, including Europe and America, the job for getting job is a little bit easier than in India and Nepal. You can say that, but the problem is what in these Western countries, not all the Tibetan people are living at the same place or together. Like in India and Nepal, we make our own settlements, we make our own schools. So we speak our own language. We teach our students about our own language, our own culture, and all these things. But in Western countries,
it's not possible like that. All they have to do their own jobs, their own staying in there, some other part of cities. Not sometimes very rarely they gather in some special occasions. So it won't be easy to preserve this our language and art in Western countries like we do in our India and Nepal. So, are you planning to expand this kind of institute or its branch, or have some collaboration with Nepali settlement in Nepal? No, it's not possible for us because these days, I guess I can say that in the past we used to have lots of artists, like 450 people working in this institute. Now we only left with 300 people, and young generation especially, they're losing the interest on learning this art because it needs a lot of patience to learn all this art. You can sit at one place and working on the same painting for almost a month or 2 months to create one painting. For that you need a lot of patience, and this young generation these days, they don't have this patience. They want to learn very quickly and produce very quickly. So it's a bit challenge for us to train and pass this art nowadays. And Nepal also, we have a students from Nepal also, at Kathmandu, from Pokhara also we have a students learning this art, and they will learn from here. They go to their own place and they started their own small workshops and training centers to pass on this art. But presently, we don't have other No, we don't have any other branch. And Okay, thank you very much for your time thank you. and your opinion, views, and wish you all the best. Thank you. Thank you.